So hello and welcome guys, this is Ashutosh and I welcome you all in this new video tutorial session of electrical machines. So today guys we are going to discuss some important interview and viva questions related to synchronous machine. So guys, let's start. Okay, this is the synchronous machine diagram, and also you can see the same machine works as a synchronous generator and the same machine works as a synchronous motor. यही मशीन है जो सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करती है और सिंक्रोनस जनरेटर के भी की तरह कार्य करती है. सो गाइस दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंट है. तो अब हम देखेंगे गाइस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, व्हाट इज short circuit ratio. So very important question guys. So basically SCR भी इसको कहा जाता है. Okay, this is not silicon control rectifier. Okay, so guys make note about this. Okay, this is short circuit ratio SCR. Okay, in a synchronous machine. So basically it is the ratio, SCR is the ratio, it is defined as the ratio of field current required for establishing the rated voltage on open circuit test to the field current required for establishing the rated current on short circuit. So basically guys, SCR is reciprocal of unsaturated synchronous reactance XD. और ये important जो formula है इसका, SCR is inversely proportional to XD. अब हम देखते हैं कुछ, there is some important points are there. So it is an important quantity of synchronous machine which helps in estimation of operating characteristics. So guys ये बहुत important characteristics जो है ये SCR है, इसकी सहायता से हम सिंक्रोनस मशीन का कैरेक्टरिस्टिक्स का एस्टिमेशन करते हैं, मापन करते हैं, आकलन करते हैं. और गाइस साइज भी जो है मशीन का इसी से डिसाइड होता है. You can read the sentence. It is also useful for obtaining the size of machine for a given rating and type. And the value of short circuit ratio, you can see over here, varies from 0.45 to 0.8 for turbo generators. तो कहीं कहीं पर गाइस ओके आपको मिलेगा 0.5 से 0.9 के बीच. ओके, एंड फॉर hydro alternator or hydro generator it is between 0.9 to 1.3 और कहीं कहीं पर आपको from 1 to 1.5 तक इसकी वैल्यू मिलेगी. This is the value, this is the range of SCR. And short circuit ratio can easily be obtained from the open circuit test and short circuit test okay of synchronous machine. आप यहाँ पर देख सकते हैं okay, by performing OCC, open circuit characteristics and short circuit characteristics, we can find out the SCR okay, and can easily be obtained. And short circuit ratio is equal to the reciprocal of per unit value of direct axis synchronous reactance. And more the value of XD की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, lesser will be short circuit ratio, तो SCR की वैल्यू कम होगी. And value of short circuit ratio or SCR affects both the size and operating characteristics of synchronous machine. So guys very important point. अब हम देखेंगे क्या फंडामेंटल है, what is the fundamental behind this, what is the concept. So in the next slide guys we will see basically the larger, अगर SCR की वैल्यू large है तो क्या होगा. So guys if larger SCR is larger okay, and then the smaller will be the XD की वैल्यू कम होगी और वहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू भी कम होगी. स्मॉलर इज LD and it is the result of large air gap. So guys because there is large air gap, so there will be more reluctance okay, and there will be more reluctance. So if reluctance is more, there will be small inductance, also mutual inductance and small reactance. Okay guys, so in design as in hydro generators और salient pole machine में आप देख सकते हैं जिसके कारण क्या होता है, what is the effect, it results into the machine is loosely coupled to the grid and its response will be low and this increases the machine's stability. So guys ऐसी मशीन जो है वो लूजली कपल्ड होगी ग्रिड के साथ
ओके बहुत ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, मतलब स्टेबिलिटी, एंड दिस इंक्रीजेस द मशीन स्टेबिलिटी while operating on grid, but simultaneously will increase the short circuit current, क्योंकि रिएक्टेंस कम है इसलिए शॉर्ट सर्किट करंट जो होगी आर्मेचर करंट उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी इसमें। एंड डिलीवरी कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन, हायर शॉर्ट सर्किट करंट आप देख सकते हैं, एंड हायर साइज एंड हायर कॉस्ट, क्योंकि गाइस लार्ज एयर गैप आपने लिया है इसलिए हायर साइज होगा और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। आप यहां पर देख सकते हैं गाइस हायर एससीआर अगर आपने लिया है तो और क्या हो सकता है, यहां पर हाई वैल्यूज ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो गिव्स इंप्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो अच्छा होगा। Thus, the terminal voltage is practically constant during the load variation, and it also results in better stability limit due to increased value of synchronizing power. So, stability इसकी अच्छी होगी, okay, and improved voltage regulation होगा. But disadvantage is what? But the disadvantage of high value of SCR is increased armature current during three-phase short circuit and increased machine size. आप देख सकते हैं, और इसके अपोजिट गाइस अगर लो वैल्यू ऑफ SCR है, यू कैन सी ओवर हियर द स्मॉलर द SCR, larger will be the reactance, direct axis reactance, larger will be the inductance, direct axis reactance, because यहां पर स्मॉल एयर गैप है, तो if small air gap is small, reluctance will be small, and therefore okay the mutual inductance will be larger, okay, and reactance is also larger. So what happens in turbo generator or cylindrical rotor machines, it results into the machine is tightly coupled, okay, reaction time बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करेगी मशीन, अगर ग्रिड के साथ ये है कपल्ड है और टाइटली कपल्ड है, so guys its response will be faster, and this reduces the machine stability and while operating on grid, but simultaneously will reduce the short circuit current. So this will be the bigger advantage guys. So what happens, also you can see there will be smaller size and lower cost of this machine, क्योंकि एयर गैप छोटा था इसलिए इसकी कॉस्ट भी, साइज भी छोटा होगा और कॉस्ट भी कम होगी। अब आप यहां पर देख सकते हैं गाइस लो SCR अगर है तो क्या होगा। सो गाइस लो वैल्यू ऑफ SCR सिंपली मींस ग्रेटर वैल्यू ऑफ XD, एंड वोल्टेज रेगुलेशन अब यहां पर पुअर हो जाएगा गाइस, ओके, एंड मोर द वैल्यू ऑफ XD द पुअर विल बी द वोल्टेज रेगुलेशन, okay, lower value of short circuit ratio results in lower stability limit, and only advantage is that the lower value of SCR is the lower value of will result lower value of armature current during three-phase short circuit. So this will be bigger advantages guys. So this is called SCR.